welcome back to our channel. Do you know कनाडा में आप एज अ स्टूडेंट विदाउट वर्क परमिट भी काम कर सकते हो? और डू यू नो कनाडा में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप आराम से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो? Watch this video till the end and you will find amazing things that you might not have known before. We are going to tell you 9 things which you must know before you plan your journey to Canada. तो देर किस बात की है? Let's begin. First and foremost, कनाडा का वेदर. As Indians, हमें काफी hot and humid climate में रहने की आदत होती है. 9 out of 12 months में हम गर्मी के मार झेल रहे होते हैं. So, if you are planning to move to Canada, then you must keep in mind कि जनवरी में वहाँ का average temperature goes down to 3 degrees Celsius, whereas जुलाई में the average temperature goes up to 18 degrees Celsius. कनाडा में काफी continental weather रहता है, so it is good for summer and winter lovers both. If you are somebody जो extreme summers and winters enjoy नहीं करते हो, so then the best picks for you can be Vancouver and Toronto. The average temperature runs 10 degrees Celsius there. उसके अलावा you can also choose Toronto and Ontario, where the average annual temperature is close to 9 degrees Celsius. And both cities have equally amazing colleges enjoying top rankings, like University of Toronto, York University, University of British Columbia, George Brown University, and many others. And if you are someone who is an absolute polar opposite, मतलब you like chilly winters and hate summers, तो Ottawa and Montreal can be great options. And वहाँ भी अच्छे colleges की कोई कमी नहीं है, like University of Ottawa, Carleton University, McGill University, and University de Montreal. चलो, now moving from weather, let's talk about our second point, which is housing. And I must tell you कि Canada में real estate prices are skyrocketing. So, अगर आप कॉलेज अकोमोडेशंस या डॉर्मेटरीज छोड़कर इंडिपेंडेंट फ्लैट्स लेने में इंटरेस्टेड हो, then the picture looks a little bleak for you. अगर हम एवरेज हाउसिंग प्राइसेस के फिगर्स को देखें, तो प्राइसेस में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है. From 7,21,100 Canadian dollars in December 2024 to 7,20,500 Canadian dollars in January. And Vancouver and Toronto में हाउसिंग प्राइसेस काफी बढ़े हैं. Well, I will suggest going for shared apartments to cut your expenses in Canada. Third, अगर हम education affordability की बात करें, तो भी Canada is quite commendable. Top Canadian universities में tuition fees are 16 to 38% more reasonable than the US universities. अगर undergrad courses की बात करें, तो international students के लिए fees will be around 25,000 to 40,000 Canadian dollars per year, whereas postgraduate courses की fees will be around 17,000 to 35,000 Canadian dollars per year. And an additional note, if you are planning for engineering, medical या STEM courses, the fees can be higher than this. Fourth point, Canada के 2 official languages, English and French. Let's list down top universities in Canada जो अपने English taught programs के लिए famous हैं, like University of Toronto, University of Waterloo, University of Windsor, York University, McMaster University, Queen's University, and many more. Fifth point, studies के अलावा कनाडा में work opportunities की भी कोई कमी नहीं है. In case you are exploring work या internship opportunities in Canada, let me tell you that without a work permit, international students semester के time पे internship या part-time jobs में 20 hours per week dedicate कर सकते हैं. And semester breaks के time, they have the freedom to work full-time. Retail, food service, tutoring और on-campus jobs काफी popular हैं कनाडा में, which have great earning potential for international students. Sixth point, अगर आप कनाडा में पढ़ने का डिसाइड कर चुके हो, तो obviously you will be needing a study permit. Proof of financial stability is a priority, which means आपके बैंक अकाउंट में 10,000 plus Canadian dollars होने ही चाहिए. Otherwise, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. If you plan to stay after graduation, कनाडा बहुत सारे इमिग्रेशन pathways भी प्रोवाइड करती है, such as express entry system and provincial nominee programs. Seventh point, कनाडा में बहुत ही ज्यादा cosmopolitan and multicultural environment है, which is quite an attraction for international students.
no history of communal strife and violence. काफी balanced and symbiotic learning atmosphere है वहाँ पे। बहुत सारे students want to know about the cultural attitude of the country they want to study in. So, it's very important for you to know that Canada is a very diverse and welcoming country, जहाँ पे काफी सारे immigrants रहते हैं, especially if you are looking for colleges in Toronto, Vancouver and Montreal. वहाँ पर international student communities का काफी अच्छा presence है, which means बहुत अच्छा cultural exposure and learning opportunities. 8th point. Housing छोड़कर अगर आप बाकी expenses के लिए worried हो, तो there is another good news for you. कनाडा के ऑलमोस्ट सारे ही सिटीज में अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांजिट फैसिलिटीज हैं, इंक्लूडिंग बसेस, ट्रेन्स एंड सबवेज। प्लस स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड ट्रांजिट पासेस का भी अरेंजमेंट रहता है, फॉर एग्जांपल प्रेस्टो इन ओंटारियो एंड ओपस इन मॉन्ट्रियल। 9th पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट अपने होम कंट्री के फूड क्विजीन्स को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बट इफ यू आर एन इंडियन इन कनाडा you won't miss anything, especially Vancouver, Brampton and Toronto में, because Canada में काफी अच्छे Indian dishes and cuisines popular हैं. You name it and they have it, like butter chicken, Hyderabadi style biryani, छोले भटूरे, मसाला डोसा, समोसा, पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन। Indian sweets भी काफी ज्यादा फेमस हैं, like गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी and काजू कतली। Apart from this, Canada अपने low crime rates, 15th position in the World Happiness Report and progressive culture के लिए काफी फेमस है। अगर आप कनाडा के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो drop your comments in the comment section. We would love to answer each and every question asked by you. If you like this video, don't forget to like and subscribe to our channel and share this video with your friends and family to educate them about Canada. अभी के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।